Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Yasudhanandana Jana Jana. Yasudhanandana Jana Jana. Yasudhanandana Jana Jana. Jamuna Tera Vanachari. Jamuna Tera Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Vishnupad Paramahamsa, Parivrajakacharya, Astrovatastat, Systematic Divine Graces, Konpanacharya, Srila Abhacharya Navendra Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jaya Vishnupad Paramahamsa, Parivrajakacharya, Astrovatastat, Systematic Divine Graces, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavendra Ki Jai. Namacharya Siddhanta Lord Ki Jai. Pransi Kahau Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Sri Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Radha Krishna Gopal Gopinath Syamkunda Radha Kunda Girivardhana Ki Jai. Vrindavan Ki Jai. Sri Mathura Dham Ki Jai. Sri Mayapanavada Dham Ki Jai. Sri Jagannathpuri Dham Ki Jai. Gangamaya Yamunamaya Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Samaveda Bhakti Vinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the Summer devotees. All glories to the Summer devotees. All glories to the Summer devotees. All glories to Sisi Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narancheva Narotamam Devin Saraswati Vyatsa Tato Jaya Mujirai Nastapaye Sabhadisu Nityam Bhagavata Sevai Bhagavati Uttaman Sloke Bhakti Bhavaiti Namistiki. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 7, Text 20. Check my bio. Is it? Okay. So, can we have a translation? Today is our good great fortune that we have with us Bhakti Vasudeva Swami Maharaj. And Maharaj is basically a disciple of his own, Bhakti Deva Swami Maharaj, and he has taken his first and second initiation from Maharaj in 1984, and later on he took his sannyas initiation from Jayapatak Swami Maharaj. And apart from that, he is educationally very well qualified, and he has done his PhD in Applied Management Decision Sciences, AMDS, in Leadership and Organizational Change, Walden University from USA, and he has published many research papers, and he is also invited for many conferences throughout the world, even in India as well, and he has presented many papers on and conferences on leadership, and it is our fortune that we have today with us Maharaj, and we seek his guidance, and thank you so much, Maharaj. So Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 7, Text 21. The title of this chapter is The Killing of the Demon Trinavata. तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय के 21वें वर्ष के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका तृणावृत का वध।
So, Gokulam Sarvam Avrivam गोकुलं सर्वमारण्यव्यं अन्मूलं Musnam Chakshum Sirenubi. मोषणं चक्षुषं रेणुभिः. It's okay, that's no need. Iranyan Sumahagora इरय्यन् सुमघा Sabdena Pradisodisaha Gokulam Sarvam Avrivam Musnam Chakshum Sirenubi Iranyan Sumahagora Sabdena Pradisodisaha Gokulam Sarvamavrivam Musnam Chakshum Sirenubi Iranya Sumahagora Sabdena Pradisodisaha. So word for word translation, Gokulam. Word for word translation, and purport. Purport is this translation is done by Prabhupada disciples or Prabhupada? Prabhupada himself? This chapter is Prabhupada? Okay, so translate word for word translation and purport by His Divine Grace Iskcon Noida. Srila A.C. Bhakti Swami Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. At least Prabhupada, we should feel obliged to glorify Prabhupada because we become purified by glorifying Prabhupada. So Gokulam, the whole tract of land known as Gokula, Sarvam, everywhere, Avrimvam, covering, Musnam, taken away, Chakshunsi, the power of vision, Renubi, by particles of dust. Iranian was vibrating. Su Mahagora, very fierce and heavy. Sabdena, with a sound. Padisa Disaha, entered everywhere in all directions. Translation, covering the whole land of Gokul with particles of dust. That demon setting, acting as a strong wild wind, covered everyone's vision and began vibrating everywhere with a greatly fearful sound. अनुवाद, उस असुर ने प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढकते हुए सभी लोगों की दृष्टि ढक ही ली और भयावनी आवाज करता हुआ सारे दिशाओं को कांपने लगा, कपाने लगा. Purport: Tinawat assumed the form of a wild wind and covered with a dust storm the whole hard tract of land known as Gokul, so that no one could see even the nearest thing. तात्पर्य: तृणावृत ने बवंडर का रूप धारण कर लिया और
समूचे गोकुल प्रदेश को धूल भरे अंधड़ से ढक लिया, जिससे निकट की भी वस्तु नहीं दिखती थी। Om Gyana Timirandasya, Gnanasalakaya, Sakso Vimanitam, Yanatismai, Se Guruve Namaha. Sijeta Yamanam Vistam, Stafitam, Yanabutale, Swayam Rup, Kadamayam, Dadatisva, Padantika. Vandisi Krishna Chaitanya, Nityananda Sahodito, Gurudaya Puspavanto, Chita Chanatamanda. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Si Advaita, Gadadhara, Sivasari, Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu, Padaya Krishna Pistaya Bhutale, Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharine, Anirvisesa Sonyabadi, Pashatyadi Satarine. Vancha Kalpataribhya Cha, Kripa Sundabhya Eva Cha, Patitanam Pavanabhyo, Varshnavibhyo. I don't remember the year that I came to this temple last. I remember when they just finished this altar. This is Noida. Yeah. I've been here before. I said I don't remember the year. It's been a long, long time. And I feel blessed to be able to come to have the darshan of their lordships and also to take all of your blessings. तो मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ मानता हूँ। महाराज कह रहे हैं कि जो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन प्राप्त हुई। So in this very text, we understand Tinawata Sura was sent by Kamsa. तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि तृणावर्त को कंस के द्वारा भेजा जाता है। After Lord Krishna defeated or annihilated the cat demon, Kamsa was very angry. He was very infuriated. Seems that his mission is being defeated. So he called up Tinawata, come here. Go to Bukur. That little boy is proving invisible. तो जब कंस के द्वारा भेजे गए असुरों को भगवान के द्वारा उनको परास्त किया गया तो कंस बहुत क्रोधित होते हैं और तृणावर्त को बुलाते हैं कि आओ और उस जो है बच्चे को मारना है। So Tinawata assured Kamsa, my master, don't worry, that's a small job for me. I'll go, and the result will be mission accomplished. तो तृणावर्त कंस को जो है सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मेरे स्वामी, मैं आपका ये कार्य जरूर करूंगा। So on this very day of this incident, Nanda Baba and Mother Yasoda, they were also celebrating Krishna's first birthday. तो नंद बाबा और यशोदा मैया जो है भगवान कृष्ण को जंगल भेजते हैं। So as the celebration was going on, Mother Yasoda was carrying Krishna on her laps. And Krishna knew what was forthcoming, that Kamsa had sent Tinawata. So he wanted to, expedite the mission of, so-called mission of Kamsa. So Lord Krishna, on the laps of his mother, he assumed a real heavy weight. Why? So that the mother will not be able to carry him and will put him down. तो भगवान कृष्ण जो है कंस का प्रयोजन जानते थे, तो माता की गोद में मैया यशोदा की गोद में भगवान कृष्ण रहते हैं और उन्होंने अपना जो है वजन को इतना भारी कर दिया ताकि जो है माता
उनको जो है अपने गोद से उतार के नीचे रखे। So Krishna became so heavy. Mother Yashoda was a little bit not being able to carry the weight anymore, so he put him down on the floor. तो भगवान अपना इतना भारी हो जाते हैं कि जो है यशोदा मैया उनका वजन को नहीं धारण कर पाती और उनको नीचे रख देती है। And subsequently she left to go and do some engage in some household chores. And all of a sudden, this wild wind is described as a tornado. Wild wind was so intense. And if you're here, you can't even see the next person. People became blinded by the wild wind. तो माता यशोदा जो है भगवान को जमीन पर रख करके कुछ जो घर के कार्य हैं उनको करने जाती है और तृणावर्त जो है एक बहुत ही भयानक आंधी के रूप में आता है, इतना भयानक कि अगर कोई उनके बगल में जो भी रहता था वो अंधे हो जाते, इतना भयानक उनका रूप था। So people were running helter-skelter in Goku, and Trinawata took advantage. He picked up baby Krishna, and started to wheel him up. तो तृणावर्त जो है भगवान के अकेले होने का जो है लाभ उठाते हैं और उनको पकड़ करके ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर। And Krishna understood the commission and omission of Trinawata, that he was sent by Kamsa to come and kill him. And so, this is the Supreme Personality of Godhead. Who can kill him? Nobody can kill him. तो तृणावर्त भगवान को मारने का प्रयोजन बनाता है, उनको ऊपर ले जाते हैं, लेकिन भगवान तो जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको कौन मार सकता है? People with myopic vision, they can't recognize, they can't identify that this is the Supreme Personality of Godhead, and therefore whatever powers that I have, whatever mystic cities that I have, cannot measure with this person's cities. लोगों का जो है बहुत ही उनके बुद्धि का स्तर बहुत ही कम होता है, तो इसलिए वो भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं। One of the blinders of the recognition of the Supreme Personality of Godhead as these so-called demons, they are envious of the Lord, and so they become blinded. They can't recognize the Lord. They are envious, so the Lord does not reveal himself to such people. तो वो लोग इतने अंधे होते हैं कि जो असुर लोग होते हैं वो भगवान को कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान की कभी उनके बारे में उनको पता ही नहीं चलता है और वो हमेशा भ्रमित रहते हैं। How is it that the demons are envious of the Lord? Even Kamsa was envious of Krishna. Kamsa wanted a Rani, and he had that. This Krishna is moving about with this girl. तो यहाँ तक कि कंस भी भगवान को कभी समझ ही नहीं पाया और वो उनको बच्चा के रूप में समझते हुए कहता है कि ये हैं कृष्ण भगवान। So all of this build up, and here Trinawata has been sent to come and do some good job. And so as Trinawata took up Krishna and was wheeling him up into the sky, and at some point in time Krishna just assumed a real heavy weight form, and Trinawata couldn't contain that weight. तो जब तृणावर्त भगवान को ऊपर आसमान की तरफ ले जाते हैं तो एक स्थान पर एक स्तर पर भगवान अपना इतना भारी वजन अपना कर लेते हैं कि तृणावर्त उसको जो है नहीं धारण कर पाते, नहीं सहन कर पाता है। He assumed his real demoniac form, and Krishna grabbed his neck
He struggled to disentangle himself for Krishna, but no way. Small child, gigantic demon cannot disentangle himself from a small baby. तो भगवान जो है तृणावर्त की गर्दन को पकड़ते हैं और तृणावर्त बहुत प्रयास करता है अपनी गर्दन को छुड़ाने का, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते हैं। और इतना बड़ा भयानक जो राक्षस होने के बावजूद भी वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाते हैं भगवान के चंगुल से। Krishna grabbed his neck like, you remember which animal, when he attacks the prey, he attacks the neck? Lion. Why the neck? The neck is where essential life force is relayed to the brain and to the whole body. The blood flows from the heart onto the brain through the nerves of the neck. And there's a particular nerve here, I don't remember the name. If you want to kill somebody, it's just 5 minutes. 5 minutes. Go onto that very nerve and hold on to it, hook it. 5 minutes, the person is dead. And so here Krishna attacks Trinavarta just like a lion attacked his prey. He went to the neck of Trinavarta. तो यहाँ पर भगवान जो है तृणावर्त की गर्दन ही क्यों पकड़ते हैं? तो जिस प्रकार से जो है शेर अपने शिकार को जो है उसके गर्दन पे ही जो है हमला करता है, और महाराज बता रहे हैं कि क्यों गर्दन का जो है भगवान ने इस्तेमाल किया या शेर करता है, क्योंकि जो हमारी गर्दन है वहाँ की जो नसें हैं वो सीधे मस्तिष्क से कनेक्टेड होती हैं। तो जब हम 5 मिनट भी अगर किसी का गर्दन दबा दिया जाए तो वो व्यक्ति ढेर हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। So here is the deal. Krishna may be seen, the baby Krishna may be seen as a small child, but all of the potentials of the Supreme Personality of Godhead are right there, intact. It's a matter of unleashing one potential to accomplish a particular objective. And so here, Krishna is unleashing that potential of conquering or annihilating the demon. And it's the same thing whether he attacks somebody as a teenager or as an adolescent or as a baby. It's the same thing. तो भगवान यहाँ पर बहुत ही छोटे बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। तो भगवान चाहे बच्चे हो, बच्चे के रूप में लीला करते हुए बड़े, किसी भी स्तर पर किसी भी उम्र की लीला करते हैं, तो भगवान जो है हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम रहते हैं। चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन वो हमेशा समान पूर्ण पुरुषोत्तम ही रहते हैं। और यहाँ पर भगवान जो है इसको प्रकट भी करते हैं तृणावर्त के वध के रूप में। So the heat was too much on Trinavarta. Krishna bucked him in the head, and Trinavarta fell. A gigantic body, he fell. And at the same time, Mother Yasoda was in anxiety because when she came, when the whirlwind was becoming so intense, and then she came back to check on her child, the child was not there. And so she searched all over the place, the child was not there, and she collapsed. तो जब इतनी भयानक आंधी वहाँ पर होती है गोकुल में, तो माता यशोदा बहुत चिंतित होती है और अपने लला को देखने जाती है, तो भगवान वहाँ पर नहीं होते हैं। तो वो इतना बेचैन हो जाती है माता कि वो नीचे जमीन पर गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है। The neighbors also came to help to search for Krishna. They couldn't find him. और जो पड़ोसी हैं वो भी भगवान
मैया यशोदा की मदद करने आते हैं, भगवान को ढूंढने आते हैं, लेकिन वो भी भगवान को नहीं ढूंढ पाते। Why they couldn't find him? Because Tinawata has taken him away. Why they couldn't find him? Because Tinawata Sura had taken Krishna in the form of the wild wind away. तो वो क्यों नहीं भगवान को ढूंढ पाते हैं? क्योंकि तृणावर्त जो है भगवान को अपने साथ आसमान की तरफ ले जाते हैं। But when Tinawata fell and the mist of the wild wind started dissipating, they saw this gigantic form, and Krishna was on his chest. तो जब तृणावर्त का वध हो जाता है और तृणावर्त जमीन पर गिरता है, तो जो आंधी थी, आंधी तूफान था, वो समाप्त हो जाता है और वो तृणावर्त की बहुत ही विशाल शरीर को जमीन पर पाते हैं और उनके ऊपर भगवान कृष्ण रहते हैं। So the Vrajabasis quickly went to pick up the child, and that's how Mother Yashoda was resuscitated. That's how she was revived in consciousness. Your child, your beloved child, not dead, but is missing. It's more painful than death. It means negligence. तो जब जो है माता यशोदा को बताया जाता है कि आपका जो है बच्चा मरा नहीं है, परंतु वो जो है क्या था, वो मिसिंग था, गायब हो गया था, तो वो वापस आ जाती है मूर्छित अवस्था से। Because if the child is dead, everybody knows the child is dead. If your child is missing, people will come and say, "What? Your child is missing?" What the hell are you talking about? Your child is missing? So all those build up this traumatic effect in Mother Yashoda, and that's how she fainted. तो जब किसी की मृत्यु होती है तो हम जानते हैं चलो मर गया, लेकिन अगर कोई मिसिंग होता है, गायब होता है, तो बहुत चिंता होती है, बेचैनी होती है कि कैसे ये गायब हो गए, कहाँ गए। तो इस प्रकार से मैया यशोदा भी जो है इस प्रकार की चिंता से मूर्छित हो गई थी। So demons are amazing set of people. They are endowed with a lot of mystic cities. Demons are amazing creatures. They are endowed with a lot of mystic cities, and nobody should play around with demons. तो जो असुर होते हैं वो बहुत मायावी होते हैं और उनके पास मायावी शक्तियां होती हैं, जिससे वो जो है लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। So, what does this pastime mean to us? तो ये जो भगवान की लीला होती है वो क्या हमें शिक्षा देती है? Bhaktivinoda Thakur in his Sri Chaitanya Shikshamrita has delineated the different pastimes of Lord Krishna regarding the demons that Lord Krishna killed in Vrindavan and the anatas. Each of these Leela, each of these demons represent. तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ चैतन्य शिक्षामृत में भगवान कृष्ण के द्वारा जो है असुरों का वध और वे असुर किस प्रकार के अनर्थ को व्यक्त करते हैं वो इसमें प्रदर्शित करते हैं। Yes, someone who can help to tell us the ananta that Trinavata Asura represent. Yes? Anyone? Can anyone help to share with us the anatta that the king of Trinavata Asura represent? तो आप में से कोई बता सकते हैं कि यहाँ पर तृणावर्त जो है किस प्रकार कौन से अनर्थ को प्रदर्शित करते हैं? You just find it now? Okay. Yes, tell us. Huh?
false pride. And the false pride specifically is in relation to mundane scholarship. तो प्रभु जी ने जिस प्रकार से बताया कि यहाँ पर मिथ्या अहंकार को व्यक्त करता है तृणावर्त, और जो हमारी मंडेन स्कॉलरशिप, What is mundane in Hindi? सांसारिक जो है हमारी चेतना को व्यक्त करता है यहाँ पर. So, this is very common. If you are preaching, especially you're preaching to professors or highly educated people, you see this a lot. They're full of pride, and that pride is really false. तो ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम प्रचार करते हैं, और स्पेशली विशेष रूप से जब हम पढ़े लिखे या जो है अध्यापकों को हम प्रचार करते हैं, तो उनके अंदर ये भावना बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर मिथ्या अहंकार भरा रहता है. One of Saswarup Goswami Maharaj's disciple, a white devotee in America, he told me a story. They went to Boston. They went to Harvard University. Harvard University is one of the Ivy Leagues in America, one of the topmost universities. So they went to Harvard University to distribute Bhakti Godhead. And they were in the park, in the university park. So it was in the morning. So he saw this guy, young man, highlighting from his car. Apparently he was one of the professors. So he approached this guy and showed him back to Godhead. Yes. महाराज एक इंसिडेंट बताते हैं, एक घटना बताते हैं. तो एक बार जो है महाराज के एक गॉड ब्रदर उनको बता रहे थे कि वो बोस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं भगवत गीता का वितरण करने के लिए, और उनके सामने से एक बहुत ही नौजवान प्रोफेसर आते हैं, और जैसे ही उन्होंने उनको भगवत गीता दिखाई, When he showed the back to God to the professor, young man, he looked at this devotee like this. And he said, "Don't you know I'm a Harvard professor?" क्षमा कीजिएगा, वो पुस्तक भगवत गीता नहीं परंतु भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड थी. तो जब वो भक्त जो है उस व्यक्ति के सामने वो पुस्तक बैक टू गॉड हेड मैगजीन दिखाते हैं, तो वो बहुत ही गर्व से ये कहता है कि आप जानते नहीं कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ. You know what? This devotee, he never went to college. He never went to college. और आश्चर्य की बात है, वो भक्त कभी भी कॉलेज नहीं गया था. He told me he was devastated. तो वो भक्त कहता है कि वो पूर्ण रूप से जो है वो आश्चर्यचकित हो गए थे, शॉक हो गए थे. He said the whole day he was traumatized because he never went to college. And this guy, he tried to give back to God. He's a big-time professor. And so he felt so bad with himself. तो वो भक्त पूरे दिन इसके ऊपर सोचने लगे कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया, और ये जो व्यक्ति जो है वो एक सो कॉल्ड प्रोफेसर है. He said he did not distribute any single back to God that day, because that seems to be like his first attempt. When he was devastated, he was traumatized, he did not distribute any single magazine back to God that day. He came back to the temple empty-handed. तो उस दिन उस भक्त ने एक भी भगवत दर्शन का वितरण नहीं किया.
तो वो पूरा दिन भर इसी ट्रॉमा में था, सोच रहा था कि और उनके बारे में प्रोफेसर, और वो वापस मंदिर आ गए. Yes, professors, I won't say all of them, most of them have this false pride, heavyweight false pride because of their learning. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे प्रोफेसर एक जैसे, बस उनमें से अधिकतर जो है उनके अंदर ये मिथ्या अहंकार है, और प्रचुर मात्रा में बहुत ही ज़्यादा अहंकार उनके अंदर होते हैं. So, this Leela of Krishna killing Trunawata demon basically helps in mitigating, cleansing the impurities arising from false pride that is rooted in materialistic education. Materialistic education. तो ये जो भगवान की लीला है, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये जो हम भौतिक संसार की जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उससे जो उत्पन्न होने वाला मिथ्या अहंकार है, उसको हम कैसे मिटिगेट, उसको कैसे कम किया जा सकता है. But you know what? Even the so-called high learning, they become humble when they meet someone who has higher values and also has the high learning. So I'll give you an example. I went to one federal university. I used to preach to professors a lot. So I went to one federal university, and I went to the head of the department for philosophy and education to solicit for an opportunity to speak to his final year students. And this professor is an elderly person. At that time, I was pretty young, so he was like of my grandfather's age at that time. And when I told him, I was putting on saffron clothes and tilak and all over. So, but also intentionally, I wanted to agitate him. So when he saw me and I made the request to speak to his final year students, he looked at me like this 3 times. And he told me, "We don't do this here." तो महाराज एक घटना बताते हैं कि महाराज वैसे कई बार कई प्रोफेसर कई कॉलेजेस में जाते हैं. तो एक बार महाराज जब अभी भी यंग ही है वैसे, तो महाराज जब यंग थे तो महाराज एक कॉलेज में जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं. वहाँ पर और सैफ्रॉन में ही जाते हैं, तिलक कंठी धारण किए हुए जाते हैं, और एक स्टूडेंट से मिलते हैं. और जैसे ही स्टूडेंट को देखता है वो उनकी तरफ घूरने लगता है और कहता है, आप यहाँ पर ये मत करो. So, at that time when I was having all these early times of my adventures in preaching to professors, why I have that courage? I had 25 publications in peer-reviewed international journals in 3 years. So that professors can't do that. They don't have that. And so when this professor told me that we don't do this here, I said, "Excuse me, sir, but I have 25 publications in peer-reviewed journals in 3 years. He was taken aback. And now he became humble. He said, very humbly, "Can I see some of those publications?" So the next day, I brought 3 journals with my publications in them to him. We flipped through, I showed him my publications. The whole scenario, the dynamics changed. It changed 360 degrees.
he said, humbly, he said, so when are you coming to make a presentation? तो जब वो प्रोफेसर महाराज को ये बोला कि आप ऐसा यहाँ पर मत कीजिए, तो महाराज उनको बताते हैं कि जो है उनके पास 25 जो है पब्लिकेशंस हैं, और ऐसा सुनते ही सारा जो वहाँ का वातावरण था वो बदल गया। और महाराज अगले दिन उनके पास 3 पब्लिकेशंस लेके जाते हैं। तो वो प्रोफेसर महाराज को कहते हैं, आप क्यों नहीं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देते हो? So, those are just some glimpses into what these so-called high-learned people do to devotees. They try to minimize their chance of becoming purified of their false ego, the false pride. And therefore, the event or the lila of the killing of Tinavata, specifically, Srila Bhaktivinoda Thakur says that this helps in destroying the false pride arising from mundane scholarship. तो यहाँ पर जो है महाराज ने ये चर्चा इसलिए की कि जब भक्त इस प्रकार से सांसारिक लोगों से मिलते हैं और तो उनका क्या होता है, उनका जो मिथ्या अहंकार है वो धीरे धीरे कम होता है। और यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो सांसारिक लोग हैं, सांसारिक चेतना वाले लोग हैं, उनका जो है मिथ्या अहंकार उनके अंदर किस प्रकार से कम होता है। The false ego or the false pride is the greatest enemy of the devotee. This very lila is very purifying for us. If we listen with rapt attention, if we read with deep devotion and deep concentration, it is very recommended, very much recommended for everyone, because the false pride is our greatest enemy in devotional service. तो जो ये मिथ्या अहंकार है, ये जो लीला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विशेष शिक्षा हमें प्रदान करती है, क्योंकि इसमें मिथ्या अहंकार किस प्रकार से मिथ्या अहंकार हमारे लिए बहुत ही बड़ा शत्रु होता है। तो ये लीला हमें ये बताती है कि मिथ्या अहंकार जो है भक्ति में जीवन में बहुत ही खतरनाक होता है। We may hear or even know that false pride interferes with our devotional progress. But there's so much of a big challenge in being humble, even after hearing, Pashyana Pashyati, even after seeing the results, the destructive results of false pride, even after hearing what others have suffered because of false pride. It is difficult for us to be humble. तो ये जो मिथ्या अहंकार है वो किस प्रकार से खत्म हो सकता है जब हम जो है विपरीत परिस्थितियों में, एक प्रकार के जो परिस्थितियां होती हैं उनमें भी अगर हम जो है धीर रखते हैं, हम्बल बनते हैं, तो ये नष्ट हो जा सकता है। But without humility we cannot make genuine devotional inquiries that could help to elevate our consciousness. Without humility, we are not going to be able to genuinely make inquiries that will help to elevate us in Krishna consciousness. तो इसलिए हमें जो है इस मिथ्या अहंकार को खत्म करने के लिए हमें ह्यूमिलिटी, हमारे अंदर जो है सहनशीलता, नम्रता की भावना होना बहुत जरूरी है, जिससे हम ये जो है इस मिथ्या अहंकार की भावना को समाप्त कर सकते हैं। So, we'd like to adjourn this
session. But before we go, maybe there is any comment or questions on this topic. Any questions or comments? Any questions or comments? अगर आपका किसी का कोई प्रश्न इस चर्चा के ऊपर, इस आज की लीला के ऊपर, Hare Krishna Maharaj. Many a times in devotional service, we feel that we should read a lot of books. We should do what? Read, Okay. study. And also, it is told in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, that one should not read too many books. So how much and how to balance? How to balance it? Yeah. Yes. Translate that question. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्ति रसामृत सिंधु में ये बताया गया कि जो है हमें जो है ज़्यादा पुस्तकें एक साथ नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन कभी कभी भक्त जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन करते हैं. तो किस प्रकार से हम इसको संतुलित कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं? Yeah, it's a nice question because sometimes we tend to be carried away with the tendency to accumulate information. But there are so many books that Prabhupada have written. We have Prabhupada's small books, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, 10 cantos. We have Chaitanya Charitamrita. It's so much for us to read, so much for us to digest. तो हमारे अंदर ये नेचर होता है, स्वभाव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं. और प्रभुपाद के द्वारा इतने ग्रंथ हैं, छोटी पुस्तकें हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है. तो हमारे लिए इन पुस्तकों को डाइजेस्ट कर पाना, इसका ज्ञान को हजम करना बहुत कठिन हो जाता है. So, yes, we should have a desire to read many books, many devotional books, many of Srila Prabhupada's books. There's so many, Prabhupada written so many books. तो हमें प्रभुपाद की अनेक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जो आध्यात्मिक पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए. Even more important than the reading is to implement in our lives what we have read from Srila Prabhupada's books. तो जब हम इनको नहीं पढ़ते हैं तो हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में कई सारे इम्पीडमेंट, कई सारे बाधाएं आ जाती हैं. तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए. Repeating what we have read is good, but implementing what we repeat in our lives is very elevating. तो किसी पुस्तक को दोबारा पढ़ना, किसी चीज़ को दोबारा पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उनको अपने जीवन में उनका अनुसरण करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो अति आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. So thank you. Any other last comment? Yes. Nowadays, we have so many distractions, primarily phone, and then so many information is coming, and we know that we don't have to watch phone all the time, but then we have less concentration. You are not able
Can you repeat what you said? Can you repeat what you said? I didn't catch everything. Can you repeat what you said? The question is that we know very well that these gadgets and a lot of social media distracts our mind, and it doesn't help us to focus on our goal. But still we are getting entangled. So how we can overcome it? Okay. So can I speak in Hindi? Yes. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हमें पता है कि जो सोशल मीडिया है या फिर अति फ़ोन को चलाना सही नहीं है, फिर भी हम जो है इसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। तो किस प्रकार से हम जो है इसको मिनिमाइज, इसको कम कर सकते हैं ताकि हम अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। This is a very nice and important question. And it just shows how Maya is very strong. तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरूरी प्रश्न है, और इससे हमें ये पता चलता है कि माया कितनी शक्तिशाली है। See, in our literatures, we find that even Munis, they fell down for sex. These days, you don't need sex to fall down. Maya arranged other things around to distract us. There are some people that they are slaves to their telephones. They are slaves to their smartphones. Slaves. There are some people that are slaves to their smartphones, cell phones. तो हम जैसे भागवतम में या पुराण में देखते हैं कि कई सारे बड़े-बड़े मुनि भी जो है अपने जो है इन चीज़ों के माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो आजकल के लोग जो हैं वे गुलाम हैं, वे अपने फ़ोन के गुलाम हैं, वे सेल फोन्स के गुलाम हैं। I have seen in our temples, even in the holy dams, the devotees who are living there, even when they are doing japa, the phone is on like this before them. They're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The phone rang. Hello. They stop. They break their communication with Krishna. This is abuse of Krishna. In America, abuse is so taken seriously. If you are talking with someone on the phone and you just drop without prayer information, it means you're telling the persons, get lost. That's what we do to Krishna. I have seen it in our temples. So it is not just the social media. Social media, you need to go, log on to the internet and all these stuff. But here you have the phone with us, and we make the phone our lovable object, our object of worship. This is the greatest Maya of the time. तो महाराज घटना बताते हैं मंदिर में जो महाराज ने देखा है कि कई बार भक्त क्या करते हैं, जप करते वक्त अपना फ़ोन बगल में रखते हैं और जप करते हैं तो जैसे ही फ़ोन बजने लगता है तो वो अपना जप माला को साइड में रख देते हैं और फ़ोन अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब तो वो भगवान कृष्ण को त्याग देते हैं और माया को स्वीकार करते हैं, और ये बहुत बड़ा अपमान है। यहाँ तक कि अमेरिका में ये बहुत ही सीरियस एक अपराध है कि जब कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा होता है और वो बीच में
जो है फ़ोन को अटेंड करते हैं, तो जिस व्यक्ति से वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, वो डायरेक्ट उनको बोलते हैं कि गेट लॉस्ट, आप चले जाओ। तो हम क्या करते हैं कि माया को हम स्वीकार कर रहे हैं और भगवान को हम त्याग रहे हैं। तो ये आज के समय बहुत बड़ी जो है, हम सभी माया के शिकार हो रहे हैं। अधिकतर मंदिरों में महाराज ने ये चीज़ को देखा है। And to add to your point, I know of people who failed out of college because of social media, addiction to the internet. I know of people who have lost their jobs because of addiction to the internet. So yes, it's a big problem. The question you ask is, what do we do? What is the remedy? तो कई सारे भक्त जो है इसका शिकार बनते हैं और भक्तिमय जीवन से जो है बाहर चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो बाहर सांसारिक लोग हैं वो अपने जॉब से हाथ धो बैठते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सोशल मीडिया के प्रति उनका एडिक्शन है, उससे उनको जो है सभी चीज़ों से हाथ धोना पड़ता है, गंवाना पड़ता है अपने आप को। One of the strategies to be able to overcome this problem is that we have strong association. When we have strong association of people, of devotees, who are not ruled, who are not controlled by the social media, rather they control the social media, they control their time, they manage their time, they lead their life, they are self-leaders. So the social media can be there, but they have allotted a particular time to check their emails. They don't sleep on the social media and lost credibility, lost their sense of belonging, lost their sense of responsibility to their families and to their jobs. तो महाराज बताते हैं कि इसकी क्या रेमेडी है, इसका क्या, किस प्रकार से हम इस प्रकार सोशल मीडिया के प्रभाव से हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा जो है उन लोगों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध और उनके साथ समय हमें देना होगा जो इस प्रकार के सोशल मीडिया के द्वारा नहीं नियंत्रित किए जाते हैं। वे जो है सोशल मीडिया उनको नियंत्रित नहीं करते हैं, अपितु वे सोशल मीडिया को नियंत्रित करते हैं। अपने फ़ोन पे अपने उनको जो भी ईमेल्स हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया पर उनके आवश्यक कार्य हैं, तो वो उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसके लिए टाइम फिक्स करते हैं कितना समय उनको उस चीज़ के लिए देना है। And we do this because, for one thing, we have a disease called Hridaya Dubalia, weakness of heart. Hridaya Dubalia, weakness of heart. तो weakness of heart. We don't have strong will. क्योंकि हमारा जो है जो इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत नहीं होती है। ये जो हृदय दौर्बल्यम, जो हमारा हृदय है बहुत ही जो है कमजोर रहता है, इसके कारण होती है। तो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं बनती है। Bhagavatam identifies a major problem plaguing us. And what is that problem? Adanta Gobi, uncontrolled senses. Uncontrolled senses. This is what is propelling us to do things against our better judgment. भागवतम जो है इस चीज के ऊपर बताती है कि ऐसा मनुष्य के व्यक्ति के साथ, जीव के साथ क्यों होता है कि जब उनके जो सेंसेस हैं, उनकी इंद्रियां हैं, अनकंट्रोल्ड होती हैं। अनकंट्रोल्ड, इज इट महाराज? इज इट अनकंट्रोल्ड सेंसेस? Uncontrolled senses, uncontrolled mind, uncontrolled senses. तो जो उनकी इंद्रियां होती है, मन
जब उनके नियंत्रण में नहीं होते, अनियंत्रित होते हैं, ये इसका मुख्य कारण है। And a simple way to boost our high control. Now listen, this is not a problem that is peculiar to devotees. It is a general problem. Uncontrolled senses, uncontrolled mind, or low self-control is the cause of all the problems in this world. And criminologists have developed a theory. It's called the self-control theory. Or you can also refer it to as the general theory of crime. General theory of crime. The general theory of crime was propounded by two criminologists. And after their research, they built up a whole body of literature in 1990 by Gottfriedson and Hitchie. Now, the general theory of crime stipulates that all crimes and antisocial behavior, means addiction to the internet, that is causing us so much trouble, is anti-social behavior. It's not Bhagavatam saying this. Criminologists say exactly the same thing what the Bhagavatam says. Exactly the same thing. It's just that they make it very literal and academic, but it's exactly the same thing. Uncontrolled senses, uncontrolled mind, lack of self-control. तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो भी अपराध या जो भी जो है क्राइम होते हैं, तो वो उनका जो है मुख्य कारण है, जड़ है, वो है अनियंत्रित इंद्रियां, मन। और यही चीज़ जो है क्रिमिनोलॉजी जिसमें बताया जाता है किस प्रकार से क्यों व्यक्ति इस प्रकार के अपराध गुनाह करता है, तो उसमें भी वही चीज़ स्पष्ट रूप से वर्णन है जो कि पूर्ण रूप से भागवतम में दिया हुआ है कि अनियंत्रित इंद्रियों के कारण ही जो है जीव इस प्रकार के घृणित कार्य करता है। चाहे वो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, चाहे वो और कई सारे जो है जघन्य जो है अपराध किए जाते हैं, इनका मूल जड़ है वो है अनियंत्रित इंद्रियां और मन। We are living in an age of social media, so it doesn't mean that you are trying to be a devotee and Iskcon is saying don't use the social media. We say use the social media, but use it productively. So, how to do that? You can allot a specific cognitive time frame for the use of your social media. In other words, you have to craft a timetable, a daily schedule where you allot different things you need to do to different time frames. But that alone is not going to help much. Because you may even have the timetable fixed on your fridge or on your door, and you violate what you yourself you have put there. तो इसका एक जो है टेम्पररी सल्यूशन यह है कि हम जो है अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उसको सही उपयोग कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बनाया जा सकता है कि इस समय मुझे इतने समय के लिए इसका उपयोग करना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। परंतु यह भी हर बार कारगर साबित नहीं होता है। Because again, because of uncontrolled senses,
We can have all of these decorations, timetable, put it on a conspicuous place, but we violate it. And so I said that one of the strategies is to have strong association. Strong association is contagious. When people come together, there is more interaction on the subtle plane than even the physical. So the type of people you hang out with will either deplete your propensity to be firm in your decision, or will help to promote that. So if you have association with people who are focused, strong-willed, determined, and they are self-controlled, you will derive some type of benefit from that association, because it will help to invigorate your own willpower and your sense of belonging and determination. So strong association is so important. Now the second thing is, do your japa during the Brahma Muhurta hours. This will help to calm the senses and the mind. तो महाराज ने यहाँ पर दो उपाय बताए। पहला है कि हमें जो है बहुत ही हमारा घनिष्ठ और मजबूत हमारा एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि जब एसोसिएशन उन लोगों का जिनका जो है फिक्स माइंड फिक्स रहता है, वो नियंत्रित रहते हैं, संयमित रहते हैं और उनका गोल क्लियर होता है। अगर हम इन प्रकार के लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, मिलते हैं, तो एक जो है सूक्ष्म जो हमारा जो चेतना है वो उनके अंदर जो ये सकारात्मक विचार हैं उनको ग्रहण करती है। तो उससे हमारे अंदर जो है ये जो बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और दूसरा जो है वो है भगवान हरिनाम। तो हरिनाम के द्वारा इस चीज़ को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। Now, the power of association can also be scientifically proven. Now, in physics, we have what is called osmotic pressure. Now, if you have two solutions separated by a cell membrane, the strong solution will draw the weaker solution within a very small time frame. Say you have a concentrated solution of sugar here or salt, and then the other one is just ordinary water. Separate them with a cell membrane. Just give, say, 1 hour, and go there. You see that the solution with concentrated solution of sugar will draw the water to itself. That is how association works. If you encounter a pure devotee, the association impacts on you. If you hang out with people who are not interested in spiritual elevation, you also get affected by their association. And even the food we eat makes a lot of meaning, because the person who cooks the food, their mentality goes into the grains they cook. So when you are trying to be a devotee and you don't want to be affected by these modern societal intrusions in your life, even you should avoid eating any grains that is not cooked by a devotee. That might be challenging for people who are not having a household, but it's worth preventing from, getting into trouble. Therefore, grains that are not cooked should be avoided. Biscuits, bread, outside there. Yeah, there's a lot of things. There's a lot of simple things that we may say
not so important. Oh, this bread, it does not contain garlic. Okay, give me. It does not click onion. It doesn't contain onion. Okay, give it to me. But there is still some danger there, because it's the person who cooks the grains, the mentality goes into the grains. Yeah. तो जो है एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है, महाराज बताते हैं कि एक फिजिक्स से, कि जिस प्रकार से हम अगर एक जगह हम चीनी लें और शक्कर लें और दूसरी तरफ पानी लें, उनको हम अलग अलग भी करते हैं, तो शक्कर के अंदर भी पानी की मात्रा धीरे धीरे आ जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी भी कारण, किसी भी समहाउ और अदर्स, हम जो है अगर बहुत ही स्ट्रांग वैष्णवों के साथ हम जो है उनसे मिलते हैं, अगर उनके संपर्क में आते हैं, तो उनके अंदर का उनके जो गुण है वो हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होने लगता है, हमारे अंदर भी आने लगता है। और दूसरा महाराज ने बताया कि भोजन, हमारा प्रसाद जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल को अदा करता है। कभी कभी भक्त जो है, हम लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं कि देखते हैं कि अच्छा इसमें जो है प्याज लहसुन नहीं है तो चलो खा लेते हैं इसको, लेकिन अगर कोई भी भोजन जो है भक्त के द्वारा नहीं बनाया गया है तो उनमें उनकी चेतना आ जाती है। तो इसलिए हमें जो है बाहर का, चाहे ब्रेड, कुकीज़, कोई भी हो, कुछ भी हो, हमें इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। So yes, we should make some timetable, allot some time, specific time to your use of the social media, so that you don't jump onto the social media anytime your mind dictates to you. तो इसलिए जो है हमें अपने जो है फ़ोन के इस्तेमाल में एक जो है बहुत ही ज़्यादा रेगुलरिटी होनी चाहिए कि कितना समय हमें जो है सोशल मीडिया को देना चाहिए। इसके ऊपर हमें एक टाइम टेबल, टाइम फ्रेम डिफाइन करना होगा। So you should try this and then you see how it works, because the most important thing is the chanting. If you're chanting, your senses and your mind will be under control. If you're chanting during the Brahma Muhurta hours, your mind and senses will be under control, no doubt. So use the Brahma Muhurta hours for japa. तो ब्रह्म मुहूर्त में जप करना का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जो है हम जप करते हैं, माला करते हैं, तो उससे जो हमारी अनियंत्रित इंद्रियां हैं वो संयमित होती हैं और हमारा मन स्थिर होता है। Render some service daily to Lord Krishna and Prabhupada, because in fact service to the devotee of the pure devotee of the Lord is even more dear to Krishna than direct service to Krishna, according to Krishna himself in his discussions with Arjuna in the Padma Purana. So render service to Prabhupada. Ask the management what service you can render. Let them engage you. Do some service. Maybe you're busy, at least by the weekend, render some physical service. That will help a lot in purification. तो हमें कुछ सेवा भी करनी चाहिए, हमें कुछ शारीरिक सेवा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की, भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। यहाँ तक कि भगवान स्वयं भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं कि सेवा कितना आवश्यक है। तो जब हम, और भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से भक्तिमय सेवा में हमेशा लग्न रहता है, मैं उसको बहुत प्रिय हूँ। तो जब हम इस प्रकार से जो है, हमें मैनेजमेंट को कहना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा मैं कर सकता हूँ, और हमें सेवा को लेना चाहिए भगवान के लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए। I hope that helps. All right, we'll end this session now. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hey, translator, can you pull this back a little bit?